हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यासिर इरफान काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं। आज के चैप्टर का नाम है प्रिजनर ऑफ लव। आज हम अज़्काबान में जेल में विजिट करने जा रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी की। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल so you can get all the notification of my new videos. Prisoner of love. चलो भाई, मेन क्वेस्ट हमारा हो चुका है स्टार्ट। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि क्या करना है हम। अच्छा जी, अंकल से मिलना है सबसे पहले। You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. Okay. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? पहले सारे सवाल पूछ लें इससे। When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. Okay. 1733 to 1747 to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. नहीं जी भाई साहब, 100 साल पहले यहाँ पे जादूगरों के मिनिस्टर थे। इसने हमें ये कहा कि हमारी नीस के पास, भतीजी के पास जाओ। And then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. ले जनाब, जो बुक का मैं ढूंढी थी उस बुक में से कुछ पेजेस मिसिंग है। ये बंदा हमें कह रहा है कि मेरी नीस भतीजी के पास जाओ और उसके साथ मिलके वो प्रिजन में जाएं। एक लड़का गुमा है, उसकी डेड बॉडी उस पेजेस के साथ गुम गई थी और उसी की गर्लफ्रेंड उसी के कत्ल के इंतजाम में जेल में है। तो आप जाके ज़रा इस मिस्ट्री को सॉल्व करो। अगर हम पेजेस ढूंढ लिए हमने तो हमें पता चल जाएगा तो वो लड़के को एक्चुअल में किसने मर्डर किया था। तो अब हम जा रहे हैं एक चाचा जो कि 100 साल यहाँ पे जादूगरों का मिनिस्टर रहा है, तो उसमें हमने उसकी भतीजी से मिलना जाके। वो भी मिनिस्ट्री में थी लेकिन वो रिटायर हो चुकी है। लेट्स सी कि वो क्या हमारी हेल्प करती है और क्या नहीं करती। तो एज़ यूजुअल मैप से आप बड़ी आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएंगे येलो लाइन को फॉलो करते करते। और मैंने स्किप कर दिया है जो ट्रैवलिंग एरिया था ताकि आप बोर ना हो। खासा लंबा रास्ता था। आप ऐसे फास्ट ट्रैवल के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि पूरा ट्रैवल करके जाता हूँ रास्ते में कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लोर करने को मिलता रहता है, तो वो मैंने एरिया स्किप किया। और अब हम इस चाचे की भतीजी के पास आ चुके हैं। लेट्स सी कि ये हमें क्या कहती है। Madam Thistlewood. मैडम I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldritch believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well.
I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. इससे भी सारी information निकलवाएं पहले. I've always wanted to see Azkaban. Count me in. I suppose it has a peculiar appeal to some, but it can be terribly disconcerting. Fortunately, being a retired Auror has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit restless, going on and on about adventure. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on the other side of the globe by now. I'd like to know more about Anne. That poor soul. Never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up dead? She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. I'd like to clear her name if we can. Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. चलो जी, अब सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, तो चिल्ला जाए मेरे ख्याल से, चला जाए. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Do take care now. लो जी, एन जो कि प्रिजन में है, जेल में है, और जैक डॉट इसकी डेथ के केस में वो अंदर हुई है, मर्डर के केस में, उसकी अनसॉल्व मिस्ट्री का लिंक है उन गायब पेजेस के साथ जो हमने बुक नीचे से सीक्रेट सेक्शन से उठा के प्रोफेसर फिग को दी थी, और उसमें से कुछ पेजेस मिस थे. प्रोफेसर फिग उसको लेके गए हुए लंदन. अभी उन मिसिंग पेजेस के बारे में पूछने के लिए हम आए हैं एन के पास, ताकि हम एन की कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि भतीजी और वो जो मिनिस्टर चाचा पोर्ट्रेट वाला, वो ये समझ रहा है कि ये बेगुनाह है, ये गलत केस में फंसी हुई है. खरगोश छोड़ के हमने सारे जो गार्ड थे उनको दिया है भगा. लेट्स सी अब वो एन हमें क्या बताती है और कैसे हम उन पेजेस तक पहुंचते हैं, और जैक डॉट की क्या मिस्ट्री है वो भी इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे लग रहा है अभी तक का.
नहीं तो हमने तो सिर्फ क्लासें ही अटेंड की हुई हैं यहाँ I पे। never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. चलो जी, भाई साहब को भी एस्कबान, इस जेल का नाम एस्कबान है, तो उसको भी एस्कबान फिरने का बहुत शौक था जो आज उसका पूरा हो गया। तो ये जादुई मंत्रालय की जेल है जनाब। कॉस्ट क्रूशियो का मतलब है क्रश कर देना। They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? लो भाई, एन का आ चुका है सेल। अब एन से हम बात करके पूछेंगे कि हाँ बीबी तुझे उन मैसेज पेजेस का कुछ पता है कि नहीं No पता। one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. ओके, वो कह रही हो बहुत You are. अच्छे से कैद है, तो आराम से बात करनी। Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in upper पेजेस एक केव में है। What are you trying to say? That the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. उसको भी पता है कि एलन है इधर। What is it, Anne? वो तेरी, वो उन्हें पंजा मारता है जहर वाला। वाओ, एन को उसने जख्मी कर दिया जो उसकी नीज थी चाचे की। तो शुक्र है हमें उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हमें पेजेस का एड्रेस बता दिया है कि एक हॉगवर्ट्स के पास एक केव है, वहाँ पे पेजेस पड़े हैं। Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get. ओ तेरी, चाची तो गायब होगी जो भाई। अब हमें पेजेस जो है वो खुद ढूंढने पड़ेंगे। मुझे था कि चाची साथ ही जाएगी, मैं But चाची हैं। Madam Thistlewood, चलो All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. जैकडॉज की केव हमने फाइंड करनी है और वहाँ से This looks हमें पेजेस intriguing. मिलेंगे। वहाँ पे कोई पजल भी सॉल्व करनी है जैसे कि शुरू में उन्होंने मेंशन किया है। चलिए, ये जो कि रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया। रेवेलियो। अच्छा, इस गेम में ना आपने एक छोटी सी टिप आपको देता हूँ कि आपने रेवेलियो जो है ना वो हमेशा साथ साथ जब भी आप नए किसी एरिया में जाएं तो वो अपने साथ साथ रेवेलियो करते रहना। उससे ये होता है कि एक तो आपको वो जो अपने उड़ते हुए पेजेस पकड़ने होते हैं वो पेजेस आपको मिल जाते हैं, और प्लस जो है और भी डिफरेंट किस्म के ट्रेजर, हिडन चेस्ट और चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं जो कि नॉर्मली विजिबल नहीं होती। वाओ, मैं सोचा था एक दफ़ा एरिया का व्यू भी ले लिए कि हम आए कहाँ पे हैं। तो फाइनली हम केव में आ चुके हैं। अब यहाँ पे पता नहीं हमारी This must be the place Anne told me about. किसके साथ हमारी इनकाउंटर होता है। इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता No one's हम been here for ages. यहाँ पे कोई एजेस से ज़मानों से आया भी नहीं है। Revelio. ठीक है, देखा है चेस्ट आपकी रिवील हो गई है पहले नहीं। Incendio. इस लकड़ी के जाले को हमें आग लगा के पहले उड़ाना पड़ेगा, सारा जल जाएगा, दैन फिर हम इसको एक्टिव करके वो रास्ता बनाएंगे। चलो भाई, इस दराज को खोलने जरा, इसमें तो नहीं मिसिंग पेजेस पड़े। वो तेरी, इसमें से स्पाइडर निकल आई है। एक दो, वो स्पेलियो किधर लग गया?
तब इतनी ज़रूरत स्पेलियो की, स्पेलियो गलती से लग गया हमें। यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा जी, वो सामने दरवाज़ा है ये वाला, और इन ड्रॉज को हमने एक ख़ास तरतीब के साथ खोलना है, तब वो दरवाज़ा खुलेगा। ठीक है, जैसे कि ये मैंने खोला है और ये नहीं बना, बात नहीं बनी, ये ट्राई भी फेल होगी। अच्छा जी, जैक डॉ साहब ने किस तरह किया इसको। अब हम इसको करेंगे 1, फिर किसी के ऊपर वाला करेंगे 2। सही खुल रहे हैं तो वो खुले रहेंगे, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है खुलने के बाद। ये देखा, ये तीनों को इसी तरतीब के साथ आपने खोलना, तब वो खुलेगा। अदरवाइज आप गलत खोलेंगे, अगर सेकंड जैसे ही गलत खोलेंगे वो पिछले को भी बंद कर देगा। 1 इसका भी उसी तरतीब से खोलना है, ये 2 राइट साइड वाले और तीसरा अपर साइड वाला। You couldn't outwit me, Jackdaw. जैक डोर साहब, हमने Now, आपकी where's the पजल clue you left behind? सॉल्व कर दिया। यहाँ पे है क्या वैसे, ये क्या पड़ा हुआ? ठीक है, A note from Jackdaw. नोट है। Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? नहीं भाई साहब, एक जैक डोर की तरफ से नोट यहाँ पे पड़ा हुआ है। पेजेस तो हमें नहीं मिले, लेकिन I should investigate. यहाँ पे हमें उसकी तरफ से लिखा हुआ एक नोट मिल गया जिसमें वो उसने थोड़ा मेंशन किया अपनी डेथ के बारे में। और फाइनली Could it be? ये है जैक डोर की Someone रूह। solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best of her in the end. Dare I ask? How is she? वो एन के बारे में पूछ रहा। She was imprisoned in Azkaban for your murder. Why didn't you exonerate her? What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently, on a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. चलो भाई, अभी पेजेस हमें मजीद आगे का उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। How is it possible to steal from Peeves? वो एज पे मुझे मिलो I फॉरेस्ट, didn't फॉरबिडन steal the फॉरेस्ट की pages edge from पे। his ghostly form. फिर बात के I पाँव merely कहाँ found से- them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Anne to take the fall? Have you never met any members of the Black family? They can be rather vindictive. Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. That her own heart had grown cold simply didn't matter. If you don't mind me asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. अच्छा जी, अब इसके बाद किधर जा रहा है? ले जनाब, आज का मेन क्वेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रिजनर्स ऑफ लव। इसमें जैक डोर और एन की एक उन्होंने मेन स्टोरी हमें बताई है, जिसमें बुक का जो पेजेस हमारे जो मिसिंग हैं उनको हमने ढूंढना है, ताकि वो जो गलत
मर्डर केस में एन अंदर है, जो कि हमें जैकडोर ने भी बता दिया कि उसने मेरा मर्डर नहीं किया। आई थिंक उसकी फैमिली ये नहीं पसंद करती थी कि हम दोनों की शादी हो या जो भी व्हाटएवर, तो उनमें से ये किसी की हरकत है। लेकिन ये सारा किस्सा रिवील तब होगा जब हमें वो बुक के मिसिंग पेजेस मिलेंगे। तो वो कहाँ से मिलेंगे? जैकडोर ने कहा कि फॉरबिडन फॉरेस्ट के एज पे आओ आप, मैं आपको बताता हूँ। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मी यासिर इरफान काजी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।